In this session we will be learn to implement store procedure, right? Kali ro jota seta hame continue kariba store procedure. You can also return value from a store procedure. Store procedure through तमे value भी return करि परिबो. खाली जे value टा store करिवो table ऊपर सेटा भी नुवा मो return भी करि परिबो माने retrieve भी करि परिबो. You can return value from the store procedure by using the return statement by using the output parameter. The return statement allows the store procedure to return only an integer value to the calling application, that is syntax is return then value, right? The output keyword always you to create a store procedure with output parameter. Syntax is create procedure name, then ta body with tar parameter भी मु देई परबी output through, right? Return ଆଉ output माने कोन धर तमे parameterized तमे किछि फंक्शन तमे डिक्लेयर करछो तमे वैल्यू टाको पैरामीटर थ्रू रु तमे पास करियो माने गोटे थर्ड पार्टी डिक्लेयर करियो थर्ड पार्टी थ्रू रु वैल्यू टाको पास करियो सेतेबेले तमरो आउटपुट स्टेटमेंट दरकार एंड रिटर्न स्टेटमेंट कोन तो जे कोन सी फंक्शन तमे यूज करो स्टोर प्रोसीजर हो किबा एग्रीगेट फंक्शन हो जे कोन सी फंक्शन तमे यूज करो से फंक्शन जेतले तमे कैलकुलेशन होउची किबा एग्जीक्यूट होउची किछि ना किछि गोटे वैल्यू से रिटर्न करिवो जो वैल्यू टा से रिटर्न करूची सेटा को टाइप रो वैल्यू को टाइप रो वैल्यू से रिटर्न करिवो सेतपय रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाय हला जे कंपाइलर से श्योर हे जो जे एई टाइप रो वैल्यू टाको रिटर्न करू जदी सेई टाइप रो अलावा जदी से आउ किछि तमरो फंक्शन जदी डिक्लेयर करिवो ताले तमको से एरर थ्रो करिवो गोटे मिनिट जस्ट हां प्रसन्न हां हां For example, create procedure name, then @employee ID. The data type होची मोर int type. Then department name, here output at shift ID int output as begin. Then तारो condition देला join कला तापर ता query टा से use कला हला accept the employee ID as an input parameter and return the department name and shift ID as the output parameter. एटा मोर होची input parameter employee ID और department name. Output टा मोर बाहरिबो shift ID, right? Output सेटा बाहरिबो. You can also call a procedure from another procedure. गोटे procedure भितर आ गोटे procedure भी तमे call करि परिबो. The procedure that calls or execute another procedure is known as the calling procedure. The procedure that is called or executed by the calling procedure is known as the called procedure, right? तार procedure A मोर गोटे procedure अछि तार ना होची A ता भितर मोर आ गोटे procedure को मु कॉल करछि तो calling procedure सेटा प्रोसेसिंग का हुए calling कला काकू आ गोटे प्रोसीजर को राइट एटा होचे मोर प्रोसीजर बी एटा कॉल्ड होची कोठी प्रोसीजर ए भीतर हला फॉर एग्जांपल क्रिएट प्रोसीजर नेम एम्प्लॉय आईडी int as begin डिक्लेयर कला वेरिएबल उडा को डिक्लेयर कला देन एग्जीक्यूट कला तार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कला देन बिगिन प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय विथ आईडी प्लस माने एटा कनकैटिनेशन करिवो हला कन्वर्ट तमरो क्यार तमरो साइज देला 10 एंड एम्प्लॉय आईडी देला तमरो पैरामीटर देला प्रिंट डिपार्टमेंट नेम प्लस डिपार्टमेंट नेम हला call the procedure get employee detail procedure एटा मोर गोटे प्रोसीजर ता भीतर आ गोटे प्रोसीजर को से कॉल कला हला बुझला then तारो देला से to execute the PRC display employee status procedure you need to execute the following statement गोटे प्रोसीजर को एक्जीक्यूट करिया पे हेले मते एक्जीक्यूट स्टेटमेंट मते देबा पड़ियो आइदर मो शॉर्ट फॉर्म में दे परिबी exec या फिर एक्जीक्यूट बोली पूरा लिखि परि
In this session, we'll be learned to implement function. Similar to store procedure, you can also create function to store a set of TSQL statement parameter permanently. Then these functions are also referred to as the user-defined function. User-defined function is a database object contains a set of TSQL statement, accepts parameter, performs an action, returns the result of that action as a value, right? तो तमे तम क्वेरी भितर तमे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी डिक्लेयर करि परिबो सपोज मते गोटे डिक्लेयर करे एक्स वाई जेड तो सेटा कोन सेटा किछि प्री डिफाइंड फंक्शन किछि नै राइट सेटा यूजर निजे दोछि तो गोटे एसक्यूएल स्टेटमेंट भितर तमे तम यूजर डिफाइंड फंक्शन तमे यूज कर परिबो बट यूजर डिफाइंड फंक्शन मस्ट बी ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस राइट डाटाबेस रो ऑब्जेक्ट हबा दरकार ऑब्जेक्ट थ्रू ताकू तमे यूज करबो नले से यूज हबो नै कारण सेही डाटाबेस से यूज करूछ बोली किछि माने अछि कि right तो सेते database रो object थ्रू ताको यूज कर user defined function contains the following component that is function name with optional schema or owner name input parameter name and data type optional applicable to the input parameter return parameter data type and optional name option applicable to the return parameter one or more TSQL statements. A UDF can be created by using the create function statement that is syntax tapre create function function name then taro rahila then taro body bhitere mu jaha bi logic lekhiya katha lekhi right तो गोटे फंक्शन को जेतरे क्रिएट करिवो सेतले क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम तमे दबो हला UDF's user defined functions can be of the following type that is scalar function and table valued function dita type ro moro user defined function अछि गोटे scalar function आ गोटे अछि table valued function scalar function कोन देखो scalar function accept a single parameter and return a single data value scalar function भितरे तमे single parameter तमे accept कर परियो and ता भितरे single value ही तमे दे परियो data value ही दे परियो for example जेमिति create function humanresource.monthly salary एटा होचे टेबल नेम monthly salary and humanresource होचे database नेम ता भितरे मोर पे रेट फ्लोट मोर गोटे डिक्लेयर कला रिटर्न फ्लोट as begin return at rate into 8 into 30 माने जेति कि तमरो पे रेट अछि त सेथरे 8 into करिवो देन जेति कि वैल्यू करिवो सेते 30 into करिवो जहां भी आसीबो सेटा तमरो वैल्यू को से रिटर्न करिवो हला accept the pay rate and return a single float value ही से रिटर्न करिवो एटा होय स्केलर फंक्शन जदी तमे स्केलर फंक्शन यूज करछो त पैरामीटर भितरे सिंगल पैरामीटर यूज करिवो एंड तार सिंगल डाटा वैल्यू ही से रिटर्न करिवो तो एठी पे रेट ता मोर होची कोन सिंगल पैरामीटर एंड तार डाटा वैल्यू मोर डाटा वैल्यू माने डाटा टाइप सिंगल डाटा टाइप तमरो फ्लोट ही से रिटर्न करिवो हला return a single value after multiplying the rate with the number of hours and numbers of days right 8 hours moro 8 ta hochi moro hours and 30 ta hochi moro number of days execute the following execute the function by using the following statement that is declare at pay rate float set at pay rate equal to human resource dot monthly salary 12.25 then print pay rate right तो मोर जेता एग्जीक्यूट करिवो सेता तमरो एई भले एग्जीक्यूट करिवो एटा को डिक्लेयर करिवो क्रिएट करिवो देन एग्जीक्यूट कला सी तमे एटा को एग्जीक्यूट करिवो वैल्यू केते रहउची सिंगल वैल्यू कोन फ्लोट टाइप हला फ्लोट टाइप को नेके से कैलकुलेट करके देखै बुझला store a value returned by the monthly salary function in the at pay rate variable create a table valued function a table valued function return a table as a output in the form of a table data type then the table data type is a special data type used to store a set of rows table valued function are of the following types that is inline table valued function and multi statement table level function inline या फिर तुम करो सिंगल लाइन टेबल लेवल फंक्शन and multi-statement table valued function. Inline table valued function returns a variable of a table data type from the result set of a single select statement.
does not contain a function body within the begin and end statement, right? So begin ଆଉ end statement ତମ ଦରକାର ନାହିଁ, create function name, then तार parameter pass कला n varchar मोर देला तार size टे देला, returns table as written, select st from human resource dot department where group name equal to at gr name कोन parameter जा value तमे pass करिवो सेटा तमर group name रे जदि मोर अछि तार सबुतक value तमु शो करिवो, माने multiple value तमु शो करिवो, that is called the inline table, right? Returns the details of the department that belongs to a particular group. You can use the following query to execute the fixed department underscore g name function with a specified argument. Select asterisk from fx department group name manufacturing, right? मोर group name टा कौन देला manufacturing ता parameter value manufacturing टा मोर match करियो कोठी group name रे, तो group name रे मोर manufacturing जोड़ी जोड़ी अछि सी त मु सेठी शो कला तार डिटेल वैल्यू टा शो कला हला बुझला। Multi statement table value use multiple statement to build the build the table, contains a function body using begin and block that holds multiple TSQL statement, right? So inline तमरो table value function रे कोन थिला जे begin आउ end तम नथिला, but multi level multi statement table value function रे तमरो begin आउ end block तमरो रहबो, ता भीतर त multiple SQL statement तमे देई पारि। For example, create function name देला, then ता parameter देला, returns at table रे employee ID int not null, rate change date time not null, एटा तार होची column गुडा, then ता type गुडा mention कला as begin, insert at table, select asterisk from human resource dot employee pay history where rate equal greater than to at rate, एटा value तमे दो जेता execute एटा लेखि सला परे execute करूछ तमे सेठी तमे वैल्यू टा पास करियो हला एक्सिक्यूट कला सी वैल्यू टा पास करे 45 को नहीं कि से तारा मल्टीपल टेबल ले से शो करियो हला बुझला। देन व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू, स्केलर फंक्शन तो हम सिंगल वैल्यू रिटर्न करियो। In this session we will be learn to implement functions, implement triggers, right? Most important part होचे triggers, right? Trigger टा सबुठी यूज हुए। Trigger. A trigger is a set of TSQL statements that execute in response to content to certain actions such as insert or delete. Is used to ensure that data integrity. Trigger माने fire करिवा, right? तो suppose मु गोटे लॉगिन पेज करूची सेठी मु जहा अपडेट करूची से ऑटोमेटिक मोर डाटाबेस रे अपडेट होची या फिर टेबल रे अपडेट होची, माने कोन ता ऊपर मोर निश्चय कोनोसी गोटे मोर असाइन हेजी टैक्स असाइन हेजी जे कि तुम डाटा को नेकी टेबल रे रखुची, या फिर जेमि तमे गोटे ट्रिगर तमे माने गन तमे नबो जेतरे ट्रिगर तमे दबो तो सेठी कोन ट्रिगर दबाले माने गोलीटा चालुची, माने ट्रिगर टा होची मोर एक्शन, ट्रिगर टा को एक्टिवेट कला माने एक्शन टा होबो तमर हला। Let us discuss different types of triggers. Trigger are of the following types, that is DML triggers and DDL triggers, data manipulation language triggers and data definition language triggers. DML triggers fire automatically in response to DML statements, do not return data to the user, ensure data integrity. Execution of a DML trigger creates the following temporary tables called magic tables. Inserted table contains a copy of all the records that are inserted in the trigger table. Deleted table contains a copy of all the records that have been deleted from the trigger table, right? So insert मोर DML statement ऊपर तमर कोन हुए, insert table मोर यूज हबो, insert table ऊपर trigger यूज हेई परिबो and deleted table ऊपर भी यूज हेई परिबो। Inserted table ऊपर मोर जेते सब मोर डाटा अछि तार कॉपी गोटे insert हेई जिवो, then deleted table जे तार कॉपी मोर delete हो, माने trigger ता तमे फायर करूछ, right?
जेमिति तमे मोबाइल रे अलार्म दौच राइट धर तुमको आज 12 बेले गोटे मीटिंग अच्छे तुम मन रन रही अलार्म सेट कर 12 बेले तुमको जना पड़े 12 बेले मीटिंग अच्छे ठीक 12 बेले अलार्म टा फायर हुए माने कौन ता पछरे निश्चय ट्रिगर यूज हो ट्रिगर टाको सेट करा रखा से टाइमिंग रे तुम से फायर करे हला depending on the operation that is performed DML triggers can be further category as insert trigger update trigger and delete trigger insert trigger is fired when a new record is added update trigger is fired when an existing record is modified and deleted trigger is fired when a record is deleted right depending on the way the trigger are fired DML trigger can be further categorized as alter trigger and inserted off trigger right alter trigger means fires after the execution of the DML operation for which the trigger is defined inserted off trigger execute inserted of the events that cause the trigger to fire can be created on both a table as well as a view right inserted off trigger रे तमरो टेबल ऊपर भी अप्लाई हे परबो as well as view जेतले तमे क्रिएट करबो सेतले भी तमरो ट्रिगर तमरो अप्लाई हे परबो तो ट्रिगर एप्लीकेशन जेतले तमे करूछ सेता बेले आइदर तमे ट्रिगर टाको तमे मॉडिफिकेशन करिवो माने अल्टर ट्रिगर करिवो जदि किछि तमे ऑलरेडी अपडेट करि देइछो माने ऑलरेडी इंसर्ट कर देइछो ता भीतर जदि किछि मॉडिफिकेशन करिके तमे अपडेट करिया पय चाहूछ ताले अल्टर स्टेटमेंट यूज करिवो एंड जदि न्यू रेकॉर्ड तमे जदि यूज करूछ ताले तम सेटा इंसर्टेड ट्रिगर तम यूज करिवो इंसर्टेड ट्रिगर तमर दि प्रकार तमे अप्लाई हे परबो आइदर तमे टेबल ले यूज करो या फिर व्यू जेता क्रिएट करछो सेताले भी तमे ट्रिगर तमे अप्लाई कर परबो हला DDL trigger is fired in response to DDL statement is used to perform the administrative task. Nested trigger can be nested as shown in the following figure that is department table le row deleted मोर कला से डिपार्टमेंट रो टेबल टा ट्रिगर जेतले मोर फायर हो सेटा कोठ हो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रे से रो टा डिलीटेड हे जिवो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रो से जदी रो डिलीटेड हे जाउची सेटा मोर कोठी लास्ट डिलीट हबो एम्प्लॉय हिस्ट्री रो से रो टा डिलीट हबो माने गोटे जगह रो मु डिलीट करली बट फायर हला कोठी एम्प्लॉय टेबल रे डिलीट हला सेठू फायर हला कोठी तार हिस्ट्री रो जेमिति धर गोटे जने रिटायर्ड होछ या फिर जनकर बहुत गुड़े एमती कंपनी अच्छा निजर वेबसाइट रे एम्प्लॉय बर्थडे हो हला किंबा एम्प्लॉय प्रमोशन है कि अलग को डिपार्टमेंट से माने चेंज हेले किंबा एम्प्लॉय रिटायरमेंट तांको वेबसाइट रे शो करे माने तांकर जो वेबसाइट रे शो करे विशेष कर मु नालको रे देखि नालको रे ट्रेनिंग दे दबा को जाए तांकर नालकर गोटे पोर्टल अछि राइट पब्लिक पोर्टल न तांको निजर पोर्टल राइट सेठी से माने लीव सैलरी फैलरी एगुडा सब से माने अपडेट से माने करन तो से माने को करन तांको पोर्टल रे सेठी ऊपर शो करे आज कहार बर्थडे अछि राइट ताकू यूज करा जाऊ किंबा कहार मारे किए प्रमोशन पाइला को डिपार्टमेंट रे प्रमोशन पाइला या फिर किए रिटायर्ड होची सेठी शो करे सेटा केमिति शो करछ सेठी कोन किए माने वेबसाइट ऑटोमेटिक शो करछ ना किए जने बसी थिबो धर मोर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जनक बर्थडे अछि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जन को हायर कराई ठीक अच्छे सी कौन कला से अपडेट करदेला जे आम डिपार्टमेंट रे जनकर आज बर्थडे है से ट्रिगर ये कला से ट्रिगर फायर हम कौटी नालकर ओल्ड डाटाबेस रे फायर है माने से देखिला मैच कला जे तार डेट ऑफ बर्थ अनुसार तार आज बर्थडे कि नहीं सेठू फायर है कौटी मोर नालकर वेबसाइट रे मोर फायर है तो वेबसाइट से शो कर राइट तो यहाँ गोटे प्रकार तुम गोटे जगार बसिक जो तुम अपडेट कर ऑटोमेटिकली मल्टीपल जगार से फायर हो ट्रिगर अप्लाई कर बुझला recursive trigger eventually call itself are special case of nested triggers can be of the following type that is direct or indirect direct recursive trigger fires and performs an action that cause the same trigger to fire again right तो टेबल ए रे जेतले मो रो अपडेट करूची सेम टेबल ले मोर पुन थरे मोर फायर हबो
तो सेटा कहे डायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर माने सेम टेबल रे पुन थरे हमर रिफ्लेक्ट हला गोटे डिपार्टमेंट लोक ट्रांसफर होगी जाइथिला आ गोटे डिपार्टमेंट को पुणी से ट्रांसफर होगी सेम डिपार्टमेंट को आसला डायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर माने सेम टेबल रे पुन थरे रिफ्लेक्ट हला इनडायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर जेमति तमरो जेमति मु तुमको कहली नालको ये रे जे गोटे जगह बसी से अपडेट करिवो सेटा जीवो आउ जण पाखकू सेठू ऑटोमेटिक फायर हबो सेठू फायर हला माने सेटा जीवो आउ जण पाखकू देन से रिफ्लेक्ट हबो तमरो निज पाखे फॉर एग्जांपल जेमति आजिकली सब ऑनलाइन रे लीव पई अप्लाई करछन आगे कोन थला आगे थला मोर पेन एंड पेपर मोर लीव एप्लीकेशन लीव फॉर्मेट गोटे थाए सेठी मु अप्लाई करे देन सेटा जाय मोर 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 डिपार्टमेंट हेड पाखु जाए डिपार्टमेंट हेड पाखरु जाए मोर एचआर डिपार्टमेंट को जाए सेठी अप्रूवल हैला पर मो पाखु इन्फॉर्मेशन आसे आजिका डेट रे सब ऑनलाइन हेला राइट तमे धरो एटा होचो तमे लीव पई अप्लाई करलो राइट सेटा लीव पई ऑनलाइन रे अप्लाई करलो सेटा फायर हैला कोठी तमरो भाया थ्रू ऑनलाइन रे तमरो डिपार्टमेंट हेड पाखरे तमरो फायर हैला राइट डिपार्टमेंट हेड कोन कला सेटा को फॉरवर्ड कला कोठी मोर एचआर डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट जेतले तमरो अप्रूवल देला सेटा डायरेक्टली कोठी आसीबो तम पाखु आसीबो अप्रूवल दे देला राइट एटा होची इनडायरेक्ट रिकर्सिव ट्रिगर मु गोटे जगह फायर कले से फायर हे आसला अल्टीमेटली मोरी पाखु ही लास्ट अपडेट मो पाखु हबो हला बुझला you want to make change in another database object whenever any new database object is created which of the following trigger will use dml trigger inserted of trigger ddl trigger and nested trigger ddl trigger right in this session we will be learn to implement triggers implement transactions let us discuss how to create trigger केमति तयारी करा जाय trigger are created by using the create trigger statement trigger ta मोर create trigger statement को हबो then create trigger name then trigger रो मोर तार अल्टर करिवो या फिर इंसर्टेड करिवो या फिर तमरो ताको ता ऊपर किछि कंडीशन दबो काहा ऊपर आइदर तमे टेबल ऊपर करि परिवो और तम व्यू ऊपर करि परिवो राइट then they did create an insert trigger name dala then on kaha upare shift table upare kala se for insert as declare modified date time dala select modified date equal to modified date form inserted if modified date not equal to get date mane ajika date jemti modified date hei nothibo begin print the modified date should be the current date hence cannot insert it right जदि मोर एटा जदि ट्रू हे गला ताले मते एरर मैसेज शो करे एटा गोटे टाइप रो एरर मैसेज ठीक अछि रोल बैक ट्रांजैक्शन राइट get fire at the time of inserting record in the shift table roll back the insert statement if the modified date is not equal to the current date creating a delete trigger create trigger delete department on human resource department for delete as print deletion of department is not allowed rollback transaction return right create delete trigger on the department table delete trigger मोर apply करा हेछि on the department table कोन पई trigger रो मोर reason एट लिखा हेछि देखो या पूर्व मोर trigger रो reason लिखा हेछि for insert trigger जेटा apply करबी से टेबल ऊपर कोन पई apply करछि insert सेमिति delete पई for delete लिखिया को पड़िबो सेठी हला prevent deletion in the department table creating an update trigger create trigger name on human resource.employee for update lekhibo reason lekhibo as if update rate begin declare at average state float select at average rate equal to average rate from human resource.employee pay history if average rate is greater than to 20 begin then print the average value of rate cannot be more than 20 get fire while updating the rate column in the employee pay history table rollback transaction and
transaction rollback karibo, rollback the transaction if the average value of rate is greater than 20. Creating an after trigger, create a trigger name on human resource shift after delete माने सेटा execute ହେଲା ପରେ value आसला ପରେ तापर ताकू delete कर दो सेते after delete बोली मोर लिखा है हला as print deletion successful, right? After delete ହେଲା ପରେ से दे दबो तुमको delete successful हैला, right? जेमती तमे कोनोसी फाइल टाकू जमे जेतले किसी अपडेट करू छ एटा क्लोज करू से कोन कहूची सेव डोंट सेव कैंसिल, राइट? तो सेते डोंट सेव करले से ताकू डिलीट कर दउची डिटो सेम जिंस मु काम करूची काम कर सला पर मोर काम सरी गला पर जदि मु एक क्वेरी टा जदि मु देइची तो ऑटोमेटिक से कोन करियो से काम सरला पर से ताकू डिलीट कर दउ हले get fired after the delete statement is executed on the shift table to display a confirmation message. Display a message inserted instead of deleting record from the project table. Create a DDL trigger. Create trigger safety on database for drop table, alter table. As print, you must disable trigger safety to drop or alter table rollback. Get fire while dropping a altering tables. While managing trigger, you can perform the following operation on a trigger, that is alter a trigger, delete a trigger. Altering trigger syntax is alter trigger, trigger name, then for, then taro statement tame lekhibo. For example, alter trigger human resource dot trigger name on trigger table name on human resource dot shift inserted of delete, right? एई डाटाबेस भितरे एई ट्रिगर टाकू मोर यूज करा हबो कहा ऊपर शिफ्ट टेबल ऊपर कोन कोन इंसर्टेड ऑफ डिलीट as print deletion of shift detail is not allowed rollback transaction. Modify the trigger delete shift trigger that was created earlier to restrict the deletion of record in the shift table. Hala? Deleting trigger syntax drop trigger trigger name. For example, drop trigger trigger गोटे trigger को जैसे delete करिया अछि ताकू drop करिवो हला delete trigger करले टेबल ऊपर से अप्लाई हबो, राइट? टेबल ऊपर डाटा टाकू ट्रिगर डाटा टाकू डिलीट करियो बट से ड्रॉप टेबल ड्रॉप ट्रिगर करछो से ट्रिगर टाकू ही से डिलीट करता. Name the table that get created when a trigger is fired. It in response to insert, delete, or update statement. Magic table inserted and deleted. Disabling a trigger syntax. Declare trigger, trigger name, then data taku disable karibo. Then ethi more dechi disable trigger. Trigger taku disable kariya pai hele disable तमरो स्टेटमेंट आउ यूज कर कीवर्ड आउ यूज करिया पड़िबो ट्रिगर सेफ्टी ऑन डाटाबेस, राइट? तो डाटा सेफ्टी टेबल ऊपर तम डाटाबेस ऊपर तमरो ट्रिगर टाकू डिसेबल तमे करिया पे चाहू. डिसेबल द सेफ्टी ट्रिगर. एनेबल करिया पे तुमको एनेबल स्टेटमेंट तम सेम जिंस एनेबल स्टेटमेंट तम दबा पड़े हला. इवेंट डेट आम काली स्टार्ट करिवो, ठीक अछि? इवेंट डेट फंक्शन आम काली स्टार्ट करिवो हला. ओके, थैंक यू. मैं एटा पठे दोछ.